자, 여러분들이 뉴스킨 First India First 멤버입니다. आप लोग इंडिया के फर्स्ट मेंबर्स हैं। 자, 여기에 누구 이름 넣어줄까요? किसका नाम लिखो यहाँ पे? संदीप सर। संदीप सर, संदीप सर। No. संदीप으로 많이 했어. पहले ही कर लिया मेरा नाम को। 오케이, 내가 우만 넣을게요. चलो जी, उमा जी का। Here's 우마. 우마가 뉴스킨 사인업 했어요. इन्होंने साइन अप कर लिया। 자, 뉴스킨에서 받을 수 있는 보너스는 세 가지입니다. 3 तरह का बोनस है इसमें। 첫 번째 보너스 이름이 레벨 1 보너스. सबसे पहले लेवल 1 बोनस। ये ज़्यादा जरूरी है, बाद में रखना है। 레벨 1 보너스. चाय को बाद में रखना है यार। 두 번째 보너스 이름이 레벨 2 보너스. दूसरा लेवल 2 बोनस। 세 번째 보너스 이름이 리드 보너스. तीसरा लीड बोनस। 레벨 1 보너스를 이렇게도 부릅니다. 마케팅 보너스. इसको हम मार्केटिंग बोनस भी कहते हैं। 레벨 2 보너스는 디벨로핑 보너스라고도 불러요. दूसरे वाले को लेवल 2 डेवलपिंग बोनस भी कहा जाता है। 디벨로핑 보너스. 그래서 자, 첫 번째 L1 보너스, 마케팅 보너스. 두 번째 L2 보너스, 디벨로핑 보너스. 세 번째 보너스 리드 보너스. 오케이? समझ गए? लेवल 1, लेवल 2, L1, L2 एंड लीड बोनस, जिसको मार्केटिंग, डेवलपिंग और लीड बोनस कहते हैं। 자, 우마가 뉴스킨 사인업 했습니다. अब उमा जी ने साइन अप कर लिया है। 자, 그러면 우마는 본인의 코드 넘버 나옵니다. उनको एक कोड नंबर मिलेगा। IN 블러블러 땡땡땡땡땡땡땡 이렇게 번호가 나올 거예요. एग्जाम्पल, My Korean number is KR00055499. It's my number. इसका नंबर। 자, 우마가 인디아 번호를 받았어요. अब इनको इंडियन नंबर मिल गया। 그리고 우마가 이제 다운라인들을 가입을 시킵니다. अब इनको अपने डाउनलाइन को सबको इंट्रोड्यूस करना है, रजिस्टर करवाना है। 다섯 명을 가입시켰습니다. 5 लोगों को कर लिया। 그런데 제가 예를 들어서 인디아 키트, 예를 들어서 글로우 키트 여러분들 11월 달에 구매할 수 있죠? ऐसे जैसे मैंने बताया था कि आपका नवंबर में ग्लो किट आप खरीद सकेंगे। 이 글로우 키트 가격 아직 몰라. पैसे नहीं मालूम कितने के हैं। 그런데 예를 들어서 이 글로우 키트 가격이 10,000루피라고 예를 들어볼게요. चलो मान लो ग्लो किट 10,000 की है। 오케이? 자, 그러면 우마가 5명을 가입시키고 이 5명이 이 키트를 다 샀어. अब 10 लोगों को उन्होंने अपने नीचे बना लिया है और 10 के 10 को ग्लो किट लेनी थी, ले ली। 이 5명 우마가 직접 만든 이 5명 여기가 레벨 1입니다. ये इनका लेवल 1 बन गया। 레벨 1. 레벨 1 보너스는 25%입니다. सीधा सीधा 25%। 자, 그러면 우마의 first generation에서 발생한 매출이 얼마예요? अब इनकी पहली जनरेशन ने कितने पैसों का काम किया? 50,000। 10 के हिसाब से 50,000 बोले 50,000। 50,000, 5 है तो 50 हुआ। Right? 그러면 여기서 25% 얼마예요? कितना हुआ? 25%? 12 12,500। 12,500। राइट। 이 보너스가 우마의 L1 보너스입니다. ये इनका L1 बोनस हो गया। 오케이. 자, 그런데 लेकिन 이 5명이 또 5명을 가입시켰어요. इनके नीचे 5 लोगों ने भी तो 5 लोग अपने अंडर करने हैं। 그러면 우마의 세컨드 제너레이션 레벨 2에는 사람이 몇 명 있습니까? कितने लोग आ गए इसके लेवल 2 में? 25। 25।
25 और 5 30 हो गए ना 25 लेवल 2 में level 2 25 people right? 자, 이 25명이 다 글로우키트 샀어요. सबने ले ली ग्लो की। 그러면 여기에서 세일즈 볼륨 얼마예요? कितनी सेल हो गई? 2.5 लाख ने 250,000 자, 25만. 괜찮아요 250,000 yes 자, 레벨 2 보너스도 25%. इसका भी 25%। 그러면 25만에 25%. 2.5 लाख का 25%। 62,500 얼마예요? 62,000 6만 2,500 रुपये। 62,500. 62,500이 레벨 2 보너스입니다. लेवल 2 बोनस में इतना। 그러면 우마가 5명을 사인업하고 5명이 또 5명을 사인업하면 우마가 받는 커미션이 얼마입니까? कितनी हो गई टोटल कमीशन हुआ की लेवल 1 और लेवल 2 की? 62 हो गई, 12,500 हो गई। 22 20 25 जोर से बोल। 25 छिलवान हो 25,000 이게 우마의 커미션이 맞아요. सही है ना इनकी कमीशन? 그런데 लेकिन 이 사람들이 또 5명 했어요. अगर इन सबके नीचे भी 5-5 हो गए तो 그러면 여기에는 레벨 3예요. ये लेवल 3 आ गया। 여기는 125 people 있어요. 125 पीपल आ गया। 레벨 3 보너스는 없어요. लेवल 3 बोनस नहीं मिलने वाला। But लेकिन 이 사람을 내가 A라고 할게요. सपोज ये लेवल 1 में A है। 이 사람은 여기서 레벨 1 보너스를 받고 여기서 레벨 2 보너스를 받겠죠. उसका ये लेवल 2 हो गया। 맞아요? राइट? 여기 있는 사람도 B라고 할게요. सपोज यहाँ पे कोई B आ गया। 이 사람도 여기서 레벨 1 보너스를 받고 여기서 레벨 2 보너스를 받겠죠. वो भी ऊपर अपने 2 लेवल तक बोनस मिलेगा। 자, 뉴스킨에서는 레벨 1, 레벨 2 보너스만 줍니다. सिर्फ लेवल 1 और लेवल 2 बोनस ही देंगे। लेकिन 리드 보너스가 중요해요. जरूरी है लीड बोनस। 리드 보너스를 이해하기 위해서는 지금 제가 커스터머는 동그라미로 그리고 बिजनेसमैन नेमो로 그린다고 얘기했잖아요. शुरू में मैंने बताया था ना कि कस्टमर आपका 0 होगा और बिजनेस पर्सन आपका स्क्वायर होगा। वहां पे लीड बोनस की इंपॉर्टेंस आती है। 지금 여기에 비즈니스맨은 아직 없는 겁니다. अभी तक यहाँ पे कोई बिजनेसमैन नहीं है 나는 네모로 그린 게 없어요 지금. कि मैंने अभी तक कोई भी स्क्वायर नहीं बना कर दिया। 자, 이 네모를 비즈니스맨이라고 안 하고 뉴스킨에서는 실제로 이런 용어를 앞으로 씁니다. BR. इसको हम बिजनेसमैन नहीं बोलेंगे, अब से हम उसको BR बोलेंगे। BR은 ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव의 약자예요. जो कि कॉमनली यूज होता है न्यूस्किन बिजनेस में। इसको ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है। BR ही बोलेंगे। 브랜드 레프레젠테티브. 자, 브랜드 레프레젠테티브가 누구냐? Who is BR? ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव। 나의 그룹에서 75,000 루피 이상의 세일즈 볼륨 하는 사람이 BR이에요. जिसने 75,000 से ऊपर का बिजनेस एक ग्रुप में कर लिया, उस ग्रुप के लीडर को BR कहा जाता है। 75,000 루피 플러스 이 사람이 BR이에요. 자, 그러면 우마가 레벨 1에 5명을 만들 때는 5만 만들었으니까 아직 BR이 아니에요. क्योंकि पहली लेग में उनके सिर्फ 50,000 की कमाई हुई थी, इसलिए वो BR नहीं बने अभी। 근데 우마가 세컨드 제너레이션을 만들면서 우마가 75,000이 넘었죠? लेकिन दूसरे लेवल में तो उनका ऊपर चला गया। 그러면 우마가 BR이 됐어요. अब उमा जी BR बन गए। 이 75,000은 한 달 동안 일으킨 매출을 얘기합니다. ये एक महीने के अंदर जो हमने बनाया उस वॉल्यूम में, विद इन 1 मंथ। 자,
자, 그러면 지금 우마는 뭐가 됐어요? BR이 된 거예요. अब उमा BR बन गए. 우마는 이제 동그라미가 아니고 BR이 된 겁니다. BR, 우마 is BR. अब उमा is BR. 자, 뉴스킨에서는 두 가지 용어가 있어요. इसमें दो तरीके की इंग्लिश यूज होती है. 첫 번째는 그룹입니다. एक होता है ग्रुप, 두 번째는 팀이에요. दूसरी होती है टीम. 우마가 만든 이 커스터머들 지금 30명의 커스터머를 여기 만들었습니다. 30 के आसपास लोग उमा जी ने बना लिए. अब 이 30명은 우마의 그룹일까요? 팀일까요? अभी उसकी ग्रुप है कि टीम है? Group, group. 우리는 그룹이라고 ग्रुप 부르는 बोलते 거예요. हैं. Group. हम इसको ग्रुप कहेंगे. आपका एक BR का जिन्होंने बनाया वो एक ग्रुप. 우마의 커스터머 그룹. 오케이? ठीक है? 자, 다시 우마 여기 있습니다. 이제 우마는 BR이 됐어요. अब उमा जी जो है वो BR बन गए. 제가 다시 그림을 그릴게요. दोबारा बना देता हूँ. 지금부터는 리드 보너스를 설명할 거예요. अब लीड बोनस के बारे में समझाऊंगा. 우마는 이제 뭐가 됐어요? BR이 됐습니다. BR. BR बन गए. BR이 뭐였죠? 어떻게 하면 BR이 됐죠? क्या करने पे BR बनते हैं? 25,000 sales करना है. 70,000 प्लस करने पे. 우마가 5명의 커스터머를 만들고 이 5명이 또 이렇게 커스터머를 만들고 이렇게 커스터머 만들고 또 이렇게 커스터머 만들고 이렇게 해서 우마가 아까 전에 소비자를 30명을 만들었었습니다. ऐसे करके उनके अंदर 30 लोग तो आ गए. 자, 그래서 우마의 L1 보너스가 12,500이었고 L1 बोनस 12,500 था. L2가 62,500이었습니다. 62,500 था. L1, L2 보너스는 커스터머 그룹에서 내가 버는 돈이에요. ये मेरे को जो कस्टमर से मिला वो पैसा. 그런데 लेकिन 리드 보너스는 이제 BR을 만드는 거예요. लीड बोनस से हम लोग BR और बनाएंगे. 마치 프랜차이즈처럼. जैसे कि कोई फ्रेंचाइजी बिजनेस चलता है. 이제 우마가 커스터머를 만드는 게 아니고 BR을 만듭니다. अब उनका काम है मुझे और BR बनाने हैं. 자, 우마가 BR을 5명 만들었어요. अब उनके 5 BR बन गए. 6명, 7명, 10명, 100명, 1000명 마음껏 만들어도 돼요. इसमें तुम जितने मर्जी चाहो BR बना सकते हो. 그런데 설명하기 쉽게 일단 5명만 만들어 볼게요. अभी सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि चलो 5 बना लें. 자, 그러면 이 5명은 다 BR이죠? ये सब BR है ना भाई. 그 말은 이 5명의 세일즈 볼륨이 47,500 이상 하고 있다는 거죠? और मतलब यही हुआ ना कि हर BR की वॉल्यूम कितनी है? 75 एंड अबव. 그런데 लेकिन 설명하기 쉽게 75,000이라고 안 하고 한 사람당 지금 10만 원락 루피 하고 있다고 예를 들어볼게요. हम लोग लेके चलते हैं 75,000 नहीं 1 लाख सिर्फ ताकि हिसाब आसानी से हो. 자, Calculation 그래서 आसान 이 है. 사람도 지금 원렉 이 사람도 원렉 이 사람 다 원렉. सबका 1-1 लाख का समझ लो हो गया. 그러면 फिर 우마는 이 사람이 우마의 first generation 팀 멤버예요. ये इसके फर्स्ट जनरेशन टीम मेंबर हो. first generation 팀 멤버가 지금 5명입니다. सपोज करो 5 ही हैं.
근데 5명이 지금 1렉 세일즈 볼륨 하고 있어요. सबकी सेल्स वॉल्यूम 1 लाख के आसपास। 그러면 여기에서 우마의 세일즈 볼륨 얼마예요? कितनी होगी टोटल? 5 lakh. 5 लाख। 5렉. 자, 질문할게요. सवाल। 이 5명도 각각 커스터머 가지고 있나요? इन सब के कस्टमर्स हैं? Yes. Of course। 이 사람도 개인의 커스터머 많이 가지고 있는 거예요. सबके अपने अपने कस्टमर्स हैं। 하나의 스토어예요, 스토어. एक अपना स्टोर समझ लो उस बंदे का। 여기는 우마 스토어. ये उमा का स्टोर, 여기는 ये उमा की, 이 5명의 스토어. नीचे लोगों के स्टोर। 여기서 5렉의 매출이 일어났어요. यहाँ पे 5 लाख की कमाई इनके स्टोर्स में से हुई। 우마는 여기서 5%의 커미션. 5% उमा जी का बैठे बैठे 그러면 얼마예요? 25,000. 25,000. 이만 5천 이게 우마의 first generation 리드 보너스입니다. ये उनका लीड बोनस बनेगा फर्स्ट जनरेशन। 왜 이름이 리드 보너스일까요? लीड बोनस क्यों कहते हैं इसको? 팀을 잘 리드했다는 거예요. क्योंकि इन्होंने टीम को लीड करके बनाया है। 우마는 5명의 팀 멤버들을 잘 리드했기 때문에 우마는 리드 보너스를 5% 받은 겁니다. क्योंकि इन्होंने अपने नीचे मेंबर्स को लीड करके उनको बीआर बना के एक टीम मेंबर की तरह लेकर ये लीड बोनस दिया। 자, 그런데 लेकिन 이 5명이 또 5명을 BR로 만들 수 있겠죠? अब ये लीड बोनस बनाने वाले जो बीआर है वो अपने नीचे भी तो बीआर बना सकते हैं। 자, 그러면 우마의 세컨드 제너레이션에서는 몇 명의 사람이 있습니까? कितने लोग हो गए उनकी सेकंड जनरेशन में? 25. Right? 5 25 5, 5, 5, 5. 25 people. 25 हो गए। 그런데 여기 있는 모두가 1렉 매출 세일즈 볼륨 하고 있어요. सबकी 1-1 लाख की होगी भाई। 그러면 우마의 세컨드 제너레이션에는 세일즈 볼륨이 25 Lakh. लाख। 자, 그럼 제가 질문할게요. सवाल 세컨드 제너레이션에서는 우마가 몇 퍼센트 받을까요? कितने मिलने चाहिए आपको? 3? 2.5? 2%. 3? 2%। 2%? 대부분 2%। I thought. 저도 그렇게 생각했어요. मैं भी शुरू में ऐसे सोचता था कि 2 मिलेंगे। 왜냐면 Because 이 5명은 우마가 만든 거잖아요. ये 5 लोग तो हमारे बनाए, 그런데 여기 있는 25명은 우마가 만든 게 아니에요. क्योंकि उमर नहीं बनाए ना नीचे वाले तो। 그런데 여기서도 5%. यहाँ भी मेरे को 5 देगी। 그러면 여기서 우마의 커미션 얼마입니까? 1,25,000. इल ई ओ ओम ओम। Right? 이 25,000 루피는 우마의 first generation lead 보너스. ये पहले जनरेशन का था। 자, 요거는 우마의 second generation lead 보너스. ये उनके दूसरे जनरेशन का लीडर। 한 번만 더 할게요. एक बार और करते हैं। 여기서 또 5명씩 만들었습니다. चलो और आगे 5। 몇 명의 사람이 있습니까? कितने लोग हो गए? कैगिशी 125. 125. 125 लोग। Sales volume is 125. Lakh. 1,25,00,000। 자, 그럼 third generation은 몇 퍼센트일까요? कितने परसेंट? कितना मिलना चाहिए? 1%. 2, 5, 1. First generation 5%, second generation 5%, third generation 5%. Same. फिर 5% ले लो भाई। 어디까지 5% 줄까요? कब तक 5% मिलेगा? अंदाजा है? 6th generation까지 5%. Same. जब तक 6 जनरेशन बनती है तब तक लेते रहो 5%।
자, 그럼 제가 계산해 볼게요. अब लगा लो हिसाब। 자, 여기까지 여러분들이 다 이해했을 거라고 믿습니다. अब तक सब समझ आ गया मुझे ये लगता है। 자, 다시 할게요. दोबारा करते हैं। 우마. उमा जी फिर 우마는 BR입니다. BR है Because 75,000 루피 이상 매출하고 있습니다. क्योंकि 75,000 से ऊपर का इन्होंने धंधा कर लिया। 자, 우마가 이 안에서 커스터머 5명을 만들었습니다. इसके अंदर 5 लोगों ने और बना लिए कस्टमर। 이 5명이 또 5명씩을 만들었습니다. सबने 5-5 और बना लिए। 그럼 이 안에는 커스터머가 총 30명이 있습니다. यहाँ 30 कस्टमर आ गए इनके अंदर। 30명이 다 10,000루피씩 구매했습니다. सबने 10,000 का सामान ले लिया। 그러면 우마의 세일즈 볼륨은 3렉 맞아요? 3 लाख हो गई 30 लोगों के हिसाब से 세일즈 볼륨. सेल्स वॉल्यूम। 토탈 세일즈 볼륨. But 우마의 इन L1 보너스는 25. 25%। 12,500이었고 L2 보너스가 62,500이었습니다. ये इनका बना था L1 और L2। 그래서 이걸 합쳐서 우마는 75,000 इसलिए इनका बन गया था 75,000 L1, L2 보너스로 이미 받았습니다. ऑलरेडी मिल गए इनको। 자, 그런데 우마가 이제는 BR을 만들기 시작합니다. 5명씩 만들 겁니다. BRAC चलवाओ। SAC. 여기가 first generation, second generation, जनरेशन के BR 5 बन गए। 6, second generation, सेकंड जनरेशन, third generation, थर्ड जनरेशन, fourth generation, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ, 6. सिक्स। 이제 모두가 5명의 BR을 만들 겁니다. अब सबके जो है 5-5 बनेंगे ना। 자, 그럼 first generation은 사람의 숫자가 5명. यहाँ 5 लोग थे, 두 번째는 25, 25 लोग हो गए, 125, 125 हो गए, 625, 625 हो गए, more than 3,000. 3,000 हो गए से ऊपर। Right? 이것은 지금 BR 숫자입니다. ये BR का नंबर आ गया आपके पास। 그런데 내가 아까 가정했어요. 한 명의 BR은 세일즈 볼륨이 1렉이었어요. 맞아요? हमने ये बोला था ना एक को 1 लाख का लेकर चलते हैं। 그러면 first generation의 세일즈 볼륨은 5렉이었고 L 이게 우마의 다운라인 세일즈 볼륨이 되는 ये 거예요. उमा जी के नीचे का सेल्स वॉल्यूम है, उनके कमाई नहीं। 핸드폰 있으신 분 빨리 꺼내봐요. कर लो हिसाब लगाना है। कैलकुलेटर निकाल लीजिए आप लोग। 이거 다 더해보세요. 5 플러스 25 플러스 125 플러스 कितने लाख हो गए, कितने करोड़ वाला लाख हो गए। 25, 30। 1500 करोड़ से ऊपर का मामला है ये। 18,780. 내가 더 빠르다. 18,780. BR. 헤이. सामने नहीं आना था। चलिए निकलिए, अब निकलिए। निकल गया आगे। एसी बंद कर देते हैं यार। Right? अभी बंद हो गया। चलिए, 이거 맞아요? या उधर से घूम के आओ, उधर से घूम के जाओ। ये टोटल नंबर ऑफ BR। 이게 우마의 토탈 팀 숫자죠. ये उनकी टोटल नंबर आ गई पीपल का। 그 말은 우마의 세일즈 볼륨은 इसका मतलब इतने लाख। right? 여기서 몇 퍼센트 받아요? इसका परसेंटेज क्या है? 5%। 5%. 18, 25, 90, 9 करोड़। 계산해 주세요. 909 करोड़ लगभग कमीशन होगा। क्या बात कर रहे हैं? 900 18,000 है। अच्छा, अच्छा लाख है।
18,780 लाख है। 18 लाख है ना? हाँ, 계산기 18,780 लाख है। हाँ, तो लगभग 9 करोड़ कमीशन होगा। 180 करोड़ है। 9 90 करोड़ 9 करोड़ 9 करोड़। 3 9 एल हाँ, 이게 우마의 한 달 수입이 되는 겁니다. एक महीने में 9 करोड़ की कमाई भी कर सकते हैं। 이게 우마의 리드 보너스예요. ये सिर्फ इनका लीड बोनस। 뉴스킨에서는 3가지 보너스 있어요. 3 तरह के बोनस हैं। L1 보너스, L1 बोनस, L2 보너스, L2 बोनस, 리드 보너스. लीड बोनस। 리드 보너스는 first generation에서부터 6th generation까지 5%. Lead actually bonus. no. 나부터예요. From me एक थोड़ी सी गड़बड़ है। So 0 to 6 level 0 to 6 5%. 그러니까 우마가 지금 3렉 하고 있잖아요. यहाँ पे 3 लाख है। 여기에 5% 플러스입니다. इसका भी 5% होगा। 이해되십니까? समझ आए? Understand? 자, 그러면 중요한 거 얘기해 줄게요. यहाँ पे जरूरी चीज 이 돈이 지금 얼마인지 내가 모르겠어요. 인도 루피라서 얼마나 큰 돈입니까? ये मुझे नहीं पता इंडिया में कितना पैसा होता है और मुझे लगता है ये बड़ा पैसा है। 여러분들이 한 달에 이 돈을 벌 수 있다는 게 믿어져요? क्या आपको लगता है कि एक महीने में आप इतनी कमाई कर सकते हो? 안 믿어지죠? नहीं, कोई बिलीव करेगा। 내가 얘기해 줄게요. मैं बताता हूँ। 1993년 1993 뉴스킨 재팬이 런칭했습니다. जापान में ओपनिंग हुई थी। 뉴스킨 일본이 런칭할 때 여러분들처럼 미리 준비하던 사람이 있었어요, 없었어요? आपको लगता है कि आप तरह तैयारी करने वाले वहाँ पे भी बिगिनिंग में लोग होंगे? न्यूज किट की लॉन्चिंग से पहले 있었어요. थे 응. थे हो चुका है 1993 में। 1993 में सर। 1993 33년 전에 재팬 오픈했어요. 33 साल पहले जापान में। 그때 여러분들처럼 준비하던 사람이 이름이 가네코입니다. उसमें जो बंदे का नाम था जो आप लोगों की तरह तैयारी कर रहा था उसका नाम था गानेको। 가네코가 뉴스킨 재팬 런칭하고 첫 번째 달에 받은 커미션 얼마인 줄 아세요? पहले महीने की कमीशन कितनी थी अंदाजा लगा सकते हो? $1 million. $1 मिलियन आज के हिसाब से 두 번째 달에 $2 million. दूसरे महीने, 세 번째 달에 तीसरे महीने, $4 million. 4 महीने, 네 번째 달에 चौथे महीने, $8 million. 8 그리고 리타이어 했습니다. रिटायर ले लिया। 뉴스킨 재팬 일본 인구가 몇 명이에요? कितनी लगता है पॉपुलेशन होगी जापान की न्यू स्किन की? 일본 전체 인구가 몇 명이에요? टोटल कितनी है पॉपुलेशन जापान की? 인도의 लेस देन बिहार। 20분의 1밖에 안 됩니다. कुछ भी नहीं है भाई इंडिया के हिसाब से तो। 근데 그것도 30년 전에 30 साल पहले 한 달에 $1 million 버는 사람이 나왔다는 거예요. तब भी इतना पैसा कमा रहा था कोई बंदा एक महीने में, वो भी न्यू स्किन करके। 여러분 할 수 없어요? तुम नहीं कर सकते? 할 수 있어요? कर सकते हैं। 컴pen세이션 플랜을 이해해야 됩니다. इसको दिमाग में घुसाना पड़ेगा। 자, 그러면 우마가 지금 939렉을 한 달에 벌기 위해서 우마가 뭘 했는지 볼게요. क्या किया उमा जी ने अब तक इतना पैसा कमाने के लिए, वो दिखा देता हूँ तुमको। 우마가 한 것은 5명을 사인업 시켰어요. सबसे जरूरी चीज पहले 5 लोग, 그리고 5명의 커스터머를 만든 거예요. वो कस्टमर पहले बनाए 그리고 그 5명에게 5명씩을 소개받은 거예요. और उन सबको फिर इंट्रोडक्शन करवाया। 이렇게. मतलब कि सिर्फ 5 लोगों पे छोड़ नहीं दिया, खुद अपने नीचे भी 5 लोगों के नीचे, और भाई तो इसके नीचे लग जा, तो उसके नीचे। 5명이 커스터머, 5명이 커스터머. 어려워요? मुश्किल है।
안 어려워요. नॉट डिफिकल्ट। 그리고 또 우마가 뭐 했어요? 이번에 리드 보너스를 받기 위해서. लीड 리드 बनाने 보너스 के लिए 받기 क्या 위해서 किया? 우마가 뭐 했어요? क्या किया उमाने? BR 5명의 BR을 만든 거예요. BR बनाया। 프로덕트를 얘기한 게 아니에요. कोई प्रोडक्ट की बात नहीं, 비즈니스를 얘기한 거예요. बिजनेस समझाया गया। 너 나랑 뉴스킨 하자. मेरे साथ न्यूज की 같이 성공하자. इकट्ठे जीतेंगे। 그래서 이 5명의 리더를 리크루팅한 거예요. तब जाके इनके 5 के नीचे 5 और लीडर बने। 우마가 만든 건 5명이에요. उमा जी ने तो ये 5 की तरफ जोर लगाया। 근데 이 5명이 또 몇 명씩 만든 거예요. इन्होंने भी तो 5 बनाए। 5명씩 만든 거예요. 이 5명은 우마가 만든 거예요. A가 만든 거예요. ये 5 किसने बनाए? ए ने। A A가 만들었잖아. 우마는 5명만 만들었다. सिर्फ 5 उमा जी की बनाई। 근데 5명이 5명을 만드니까 25가 됐잖아요. 25 बन गए भाई बड़ा। 근데 25가 또 5명씩 만드니까 125 됐잖아요. अब वो मेहनत 25 की आगे 125 बनाए। 125명이 또 5명 만드니까 625명이 됐잖아요. फिर 625 भी बने। 그런데 लेकिन 뉴스킨을 제외한 모든 MLM 회사들은 밑으로 내려갈수록 퍼센티지가 줄어요. सभी MLM कंपनी में जितना नीचे जाते जाओगे परसेंटेज तुम्हारा कम होता जाएगा। 여기는 5여도 세컨드에서는 3%, 3%, 2%, 1%, 0.5%, 0.25% 이렇게 가요. Most of MLM 회사가. ज्यादातर समय। 근데 뉴스킨은 लेकिन न्यूज के 5, all 5% 똑같아요. हर लेवल पे 5। 이해되세요? घुसा दिमाग में 여러분들이 이 돈을 벌 수 있다는 게 이해가 되세요? समझ रहे हो? ये पैसा तुम भी कर सकते हो। 자, L1 보너스, L2 보너스, 리드 보너스. 자, 여러분들이 버는 대부분의 보너스는 리드 보너스가 될 거예요. आपका जो मेन बोनस आना चाहिए वो लीड बोनस। 자, 여러분들 한 달에 10만 달러, 만 달러는 1000만 원. 한 달에 10만 달러. 인도 루피로 얼마일까? 1억 정도면. 그거 얘기해 주고 싶어요. 60 लाख 60 लाख रुपीस एक महीने। 한 달에 그 정도 돈을 벌면 여러분들 어떨 것 같으세요? कैसी फीलिंग होगी अगर महीने में इतना पैसा आ जाए? पोर्से खरीदेगा पहले बंदा अंबानी वाली ये तो काफी बड़ी थी। 여러분, 뉴스킨 코리아가 언제 런칭했냐면 뉴스킨 코리아 1996에 런칭했습니다. 1996 में ओपनिंग हुई थी कोरिया में। 30년 됐어요. 30 साल। 런칭. 한국 인구는 5천만 명밖에 안 돼요. कितनी पॉपुलेशन है कोरिया की? 15 करोड़। 그 한국 뉴스킨이 런칭할 때 시작했던 사람들 많이 있겠죠, 여러분들처럼. तब भी काफी लोग होंगे जो शुरू कर रहे होंगे। 그 중에 한 명을 제가 여기 모시고 왔어요. उनमें से एक आज आपके बीच में 뒤에 있습니다. आपके पीछे बैठे हैं। 뒤에 보세요. वो देखो 박수 पीछे। 한번 주세요. तालियां हो जाओ। 저분은 뉴스킨 30년 하신 분입니다. 30 साल जब ओपनिंग हुई थी तो वो वहां से शुरुआत हुई। 지금까지 뉴스킨으로 번 전체 돈이 10 million 달러. अभी तक जो धंधा कर चुकी है कोरिया में $10 million। लाइक मोर देन 6 करोड़ 600 करोड़ 600 600 करोड़ 지금 한 달에 정도의 커미션을 받고 있습니다. महीने में उनके पास 60 लाख रुपया। 여러분들도 그렇게 될 수 있습니까? तुम लोग भी कर सकते हो। 이따가 우리 사장님 이름은 미스터 강. मिस्टर कांग है वो पीछे बैठे हैं। 뉴스킨 코리아 탑 리더입니다. वो टॉप लीडर है कोरिया। 원 오브 탑 리더. वन ऑफ द टॉप आएंगे बुलाएंगे। 이따가 저분이 앞에 나와서 여러분들 한 그 30분 정도 또 트레이닝 할 거예요. वो भी आप लोगों को आज बताएंगे और थोड़ी ट्रेनिंग भी देंगे। 자, 이 컴pen세이션 플랜에서 궁금한 거. इसमें कुछ जो पूछना हो।
in this product, when we sell this product, how much percentage goes to the in commission and how much is the product cost? 제품 가격이 얼마냐고요? कमीशन जो इतना बढ़ जा रहा है अल्लाह तो फाइनली उसको ना प्राइस कितना होगा? वही तो हमने अभी